Yes, yes, yes. Happy evening to all. How are we all? Good. I waited. Amazing. Fine, sir. Fine. Great. Great, great, great. So, welcome all of you into 120th week of Phoenicia Saturday Nourish and Flourish. And it's going to be a Saturday business meet from here on. We'll not be talking about Enagic Kenyan water as a product. We all know that we have a great product, we have a great company. We also know that we have a great water in the world, in the universe as a whole. And we also know that we have been there for 48 years with 1.7 million customers, with process patents, with design patents, with patent of our 8-point business algorithm. Everything is in place. So there is nothing more to talk about product after 7 years. Does anybody feel we need to talk about the product? Please type 111 in the chat box if you feel on a Saturday we need to talk about the product. Please type in the chat box. So a warm welcome to all of you while you are participating in the hydration test, where you're going to type quickly whatever responses required for the interactive session we are offering on this platform. By the way, how was yesterday's session? Friday Kenyan Water Talk Show 120th week, hosted by Suma Gowda, our international host and AVP partner Phoenicia from Dubai, and also our co-founder, director Arundhati on the platform, the Women Power. Great. While we are discussing as a recap, people who were there, people who missed, let us check what we have taken back from the system. Please type in the chat box one thing, okay, one thing that you have taken away from yesterday's session. What is that one thing you have taken? Please type, or you can unmute for the moment. I would recommend all of you, you can unmute yourself one by one. Lekin after you share your views or express your views, मैं request करूँगा कि आप लोग mute हो जाएं, because it will disturb the thought process. Wow, serving with humility. Fantastic, Adesh ji, that's a very nice takeaway, serving with humility. And of course, we also know that India is #1. And teamwork is important, Swarup ji, amazing takeaway. They say when we come to an event, even if we are compassion in whatever we do, again, amazing. Even if we are able to take away one single word, one single philosophy, one single sentence, sharing and caring, that's right, Goraknath ji. So even if we are able to adopt one single word, one single sentence, or one single philosophy for the rest of our lives, guys, this is shared by a billionaire, okay, not a millionaire. We are talking of a person and a personality who's legendary, who's iconic, who's built a network and a team of 1 million people, guys. Out of the 1.7 million, 1 million belongs to this line of sponsorship, somewhere in his team as an association. And bigger than that is his contribution as a chairman of the entire federation of Enagic distributors worldwide. That's a very, very amazing position, I would say. A big clap to the icon of Enagic, the celebrity of Enagic, JV Pacifico sir, for honoring this platform, sharing his wisdom. I would always say, like my mentors taught me one thing, किसी के ग्रामर पे मत जाइए, किसी के सेंटेंस पे मत जाइए, किसी की खामियों पे मत जाएं. Similarly, don't look left, don't look right, don't look centered, don't check if your upline is there, don't check if your friends are there, don't check if your prospect जिनको आपने बुलाया वो है कि नहीं मीटिंग में. It is all about you guys.
Friday and Saturday, especially the talk shows and the Saturday business meet, we are going to tighten our seat belts now. Saturday is going to be very, very powerful, very, very different, where we are going to now take this only as a business meet every Saturday for the next 2 years, guys. Entire 2023 and 24, it is going to be Saturday N&F business meet. And have you seen the tagline, the last tagline that was mentioned on today's link? Anybody here who has read the link? Normally, हम सबको आदत है click करके अंदर चले जाने का. That's it. You don't even want to type the ID and passwords. I've seen that. लोगों की आदतें आजकल खराब हो गई है. बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन में हम लोग डील करते हैं. So what was the last tagline without going back? How many of you can even recollect what it was? Self-driven Okay. and profit-centric, business-centric. Profit mindset. Today we are going to talk about self-driven. We are not here to motivate anybody on Saturdays, no, guys. If you are not self-driven, अगर आपको आपकी जिंदगी की नहीं पड़ी है ना, तो दुनिया में किसी को आपकी पड़ी नहीं है. Let's be very clear. No soft mindset, no soft corners. We want to sound very painful. We want to sound very harsh. We want to be very clear. जिंदगी ने अगर आपको ठोकर मारी है, there is no remote that will pull you out. There is no remote that will pick you up. आपको खुद को उठना है, guys. It is not an upline's responsibility. It is not a downline's responsibility, not a sideline's responsibility, not Enagic's responsibility, and not even Kenyan water device responsibility. Ladies and gentlemen, today when we start this session, I want to be very, very strong mind and strong in emphasizing that अगर life में आप बर्बाद भी हो ना, let me emphasize from this platform, अगर आप life में बर्बाद भी हो, negative profile में हो, when you are looking at this project, मैं कहूंगा 2-4 ग्लास 9.5 pH केंगन पानी पी लो, अल्कलाइज कर लो, and believe me guys, आप जो भी परिस्थिति में मेरे को कोमा से अल्कलाइज करके मेरे को नॉर्मल बनाया ये पानी ने. तो जो लोग सांसें ले रहे हैं, जिनको दिखाई देता है, जिनको सुनाई देता है, जिनका बॉडी में मूवमेंट है, ब्रेन कमांड्स ले रहा है ना, 1 लीटर 9.5 pH अपने जहन में, अपने शरीर में उतार दो. अगर आपके पास मशीन नहीं है, आपके दोस्तों के पास जाइए जिनके घर में मशीन है, बकायदा वो पानी लाके नहाइए. ड्रिंक इट इनसाइड, फील इट आउटसाइड, shower with 9.5, I would say. Drown yourself in that for a few minutes and again sit back and check out कि लाइफ में आपको क्या करना है. Believe me, there is a wonderful book written by Dr. Barodi. Okay, आपको वो बुक पढ़ना चाहिए. Alkalize or die. मतलब हमारा जिंदा रहने का जो वजह है ना, our body has to be 70% alkaline and 30% acidic. So very important for us to understand this balance. Because of oxidative stress, because of hydrating stress, because of acidic stress and lifestyle stress, जो भी तरह का stress है ना हमारे life में, because of that what happens is we go down. हमारे cells के milli voltages totally dip होने लगते हैं. परिस्थितियों में, मनस्थितियों में, it could be financial situations, it could be physical situations, it could be mental emotional situations, could be any situation. And the simplest solution on the entire planet Earth, the secret formula is pick up 9.5 pH, 1 लीटर 2 लीटर अंदर उतार दो, 1-2 लीटर में shower ले लो, नहा लो, and sit thinking what you need to do next, and you'll get all positive thoughts, guys. That's the power of alkalizing. They say our cells work differently in higher vibrations, higher voltages, higher charges. Okay, जब electrical charge, millivolt charge of our cells is above -50, मतलब healing voltage is -50 for our cells. और जब आप -500, -600, -850 millivolts का पानी पीते हैं ना by default,
your 37.2 trillion cells will start vibrating differently. Second most important thing, they say our cells regenerate every single day. That means हम में कुछ भी पुराना नहीं है. हम बोलते हैं क्या हमारा एज हो गया, हमारा उम्र हो गया, I am 20, I am 30, I am 40, I am 50. It's all a story that you give yourself. Your cells regenerate every single day, and there are certain cells, certain parts of the body, and certain cells in your body that regenerate once in a week, or once in a month, or once in 3 months, or once in 6 months, or once in 500 days. में वो जब change होते ना, regenerate होते होते. That is why we look different. When we were young, we were different as a toddler. We start looking genetically different once we start growing. जो पतला था वो मोटा होने लगता है after 10th grade. जो मोटा था वो पतला होने लगता है after 10th grade, isn't it? We undergo different kinds of genetic changes, physical changes, mental changes, emotional changes, financial, social, spiritual changes. सब कुछ बदलता रहता है हमारे में. So our entire 37.2 trillion cells की कहानी सुनोगे तो you are a new person living with an old mindset. मतलब कल की परिस्थितियां आप आज जीने की कोशिश करते हो, which doesn't exist. So for all of us, this power of cells is available by changing the millivolt to -50 and above. And the simplest way to become positive, turbocharged, highly energetic, highly vibrant, आपके परिस्थितियों के ऊपर उठना है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनके पास भी कैंगन डिवाइस हो, आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आप 2, 4, 5 लीटर का पानी पी लेते हो ना एक दिन में, believe me, your cells respond very differently. And when cells start responding differently, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम नए इंसान, नई सोच, नई ऊर्जा, नए तरीके से हम वही परिस्थिति को देखने लगते हैं. And we become magical guys. So how many of you want to be magical and self-motivated? Please type I in the chat box. And मैं recommend करूंगा सभी लोग वीडियो पे आ जाइए. Let's make it very powerful and interactive, guys. बहुत हो गया कैमरा का पीछे छुप के बैठना, 10 काम एक साथ करना. अगर जिंदगी में फॉर्च्यून कमाना है ना, बिजनेस मीट में बैठकर आप ऐसे कर सकते हैं क्या? You are sitting with Mukesh Ambani or Ratan Tata sir और आदित्य बिरला और कुमार मंगलम बिरला, किसी के साथ भी अगर आप बैठते हैं, अडानी जी के सामने बैठते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठेंगे तो ऐसे ही बंद करके बैठेंगे क्या वीडियो? And you will talk to him and he will listen to you. It doesn't happen that way, guys. So as a matter of protocol, let us follow certain respects. हम सीरियस बिजनेस बात करने वाले सैटरडे में, तो वही लोग यहाँ पे आइए जो लोग सीरियसली अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं. We have been goody for last 120 weeks, 119 weeks. From now on, we are grown-ups, guys. The honeymoon period is over. Let's talk serious business, and we have to behave and respond like serious businessmen. Yeah, for people who are traveling, who are in traffic, Chinnappa bro noted. So all the people, for them, उनके लिए थोड़ा सा हम माफ कर सकते हैं, हम थोड़ा सा लिबरल हो सकते हैं. But otherwise, अगर आपके पास मौका है, be on videos, be on cameras, make it two-way interactive, participation equal to value. यहाँ पर हम आपके लिए बैठे हैं, ये शाम आपके नाम है. अगर आपके चेहरे ही दिखाई नहीं दे, maybe there is no attachment and rapport build up, and this is exactly what happens in a digital marketing world, guys. Unknown personalities को टैप करते, रिश्तेदार तो खड़ा नहीं करते हमें, दोस्त लोग तो खड़ा नहीं करते हमें, और जिनको हमने 2-4 कंपनियां रेकमेंड की उसके बाद तो आपको देखना नहीं चाहते. अगर उन्होंने 2-4 कंपनियों में पैसे लगाए, डूब के बैठे, तो वो तो आपको देखेंगे ही नहीं, आपसे डरेंगे. मतलब शादी में भी बुलाना है तो डरेंगे, मेरे कॉन्टैक्ट उठा के लेके जाएगा, ये अपना बिजनेस बात करना शुरू कर देगा. उस डर के हमारे लोग सर्कल ऑफ इंटरेस्ट, जान पहचान के आदमी लोग भी नहीं बताते. इफ यू से गिव अस 2 रेफरेंसेस, दे विल नॉट गिव यू. They'll give to X, they'll give to Y, they'll give to Z. So ladies and gentlemen, today let us talk a little reality. Is it okay? गुड़ी बहुत बात कर लिया, मीठा बहुत बात कर लिया, because
You may feel you are a king, you are a god, you are an entrepreneur. You invested maybe 2,20,000 or probably 2,77,000 or 3,43,000 or maybe 3,97,000. Guys, I would say none of these investments today qualify for a strong global business. कितने लोगों को अनुभव है एक बिजनेस शुरू किया आपने, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म या एलएलसी कंपनी या एलएलपी कंपनी, कितने लोगों ने कभी अनुभव है किनके पास, या फॉर्म्ड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगा सबसे पहली बात, आज हम बिजनेस मीट में है. आर वी रेडी फॉर द बिजनेस? प्लीज टाइप 222 in the chat box. While you are typing 222 in the chat box, I really appreciate, respect everybody participating here. आप सब लोगों के अनुभव को मैं नमन करता हूँ. Gratitude तहे दिल से for the respects that you all offer us. But this respect comes with a commitment and responsibility and accountability on this platform. तो थोड़ा सा मुझे harsh भी रहना पड़ेगा आप लोगों के साथ. So kindly give me a permission and trespass so that I can really fix something for you guys. तो कहने का मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अगर आपको बिजनेस चलाने का अनुभव है या नहीं है, एक बात बता दूं मैं आपको. इफ यू वांट अ लीडिंग फ्रेंचाइजी, मान लो आपको 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में आपको बिजनेस करना है और आपको मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेनी है, केएफसी की फ्रेंचाइजी लेनी है, या इवन आइसक्रीम पार्लर्स के आजकल तरह तरह के बास्किन रॉबिन से लेके ऐसे बहुत सारे निकलते, आए दिन गए दिन एक फ्रेंचाइजी निकलता. एवरी फ्रेंचाइजी कॉस्ट यू अ बॉम्ब जो रेप्यूटेड है. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दोस फ्रेंचाइजीज जो आज शुरू किया है. दे प्रॉमिस यू द मून, कल रहेंगे नहीं रहेंगे मालूम नहीं हमें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, इट ऑल कॉस्ट यू 25 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs only for 3 to 5 kilometers दायरे में काम करने के लिए. लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको 10 अलग अलग शोरूम्स खुलने हैं ना, 10 अलग अलग लोकेशन में आपको स्टार्ट करना है ना, द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है, वो बढ़ने लगता है आपके लिए. इट नेवर रिमेन्स द सेम. नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ अ बिजनेस. व्हाई दिस इज अ सीरियस बिजनेस मीट? We are talking of a partnership into a $1 billion company, guys. How many of you are excited looking at the potential $1 billion? मतलब रिस्क है ही नहीं, या तो कंपनी का विजिबिलिटी अपने यहाँ पे. बिलियनर बोला तो कौन बिलियनर को नहीं जानता? लोग मुझे नहीं जानते, आपको नहीं जानते, लेकिन बिलियनर्स को सब जानते हैं. रिश्ता बनाना चाहते हैं. Oh, I think like this person, I think like that successful person, because success has too many owners. Failure is an orphan. तो हम सक्सेसफुल ब्रांड्स को फॉलो करते हैं, है ना, और हमें चाहिए होता है हम भी अटैच करें उनके साथ में. बट आई एम टेलिंग यू, इट विल कॉस्ट यू मिनिमम 1 to 2 crores ऑफ अ बिजनेस. तो चलिए आज बिजनेस का एक प्रिंसिपल बताता हूं. इफ यू थिंक हमने 4 लाख इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, मशीन लिया, प्रोडक्ट लिया, तो हम शहंशाह बन गए, सुल्तान बन गए, है ना, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिकली. गाइस, एक ही बात बताऊंगा मैं आपको, आप सिर्फ पानी पी सकते हैं. यू कैन फील हेल्दी एंड यू कैन टॉक अबाउट इट, एंड अनलेस यू टॉक अबाउट इट यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी. कोई नींद से उठ के आपके नीचे कोई एक आदमी डालने वाला नहीं है, भूल जाओ. अगर वो एक आदमी डाला है, इमेजिन कीजिए, आप उसको बोलते हो भैया तुम मेरे पिलर हो, मैं तुम्हारे कंधे पे मेरा रोजी रोटी चलने वाले. कितने लोग आपके लिए काम करेंगे, आपके सपनों के लिए काम करेंगे? He'll run away. Ladies and gentlemen, if you want to build a team of active people, active force, active millionaires, active billionaires, active trillionaires, you have to be one first. Attitude. अगर मेरा एटीट्यूड ये ना बेगिंग का है, प्लीडिंग का है, प्लीज मेरे से मशीन ले लो. कितने लोग हैं यहाँ कैंसर पेशेंट ढूंढते मशीन लेने के बाद? खानदान के सब बीमार लोगों को या पोटेंशियली बीमार हो सकते हैं बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को पकड़ के लाते. गाइस, 1 साल के बाद अगर आप अपनी जीनोलॉजी खोल के देखोगे, कैंसर 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 कैंसर, उसमें से 10-20 ऑलरेडी जा चुके, यू नो, बाकी के उनको देख के ही रिटायर हो चुके.
बोलते हैं कुछ नहीं होता, पानी को लेकर, बिजनेस को लेकर, मशीन को लेकर, यू विल हियर ऑल स्टोरीज एंड यू विल एंड अप इन डिप्रेशंस गाइस. Today when we talk business, let us understand, do we love money? Please type I love money in the chat box. जितने लोग हैं यहाँ पे, please type I love money. सवाल है, कितना बड़ा इश्क है आपको पैसे को लेकर? अगर आप में दीवानगी नहीं है, आप में जुनून नहीं है, आप में जोश नहीं है पैसा कमाने का, let me tell you guys, the money will not come to you. Unless you vibrate money, unless you vibrate like a millionaire, billionaire, trillionaire of the future, the money will not happen to you guys. Empty pockets, no problem, but empty mind is a big problem, our attitude. Can we today pledge ourselves? हम $1 trillion इंडस्ट्री के पार्टनर्स हैं, $1 billion कंपनी के पार्टनर है. इससे ज्यादा नीड बेस्ड प्रोडक्ट मुझे दिखाइए दुनिया में. It is only air. Water is next to air. इससे जरूरतमंद चीज है क्या पूरे विश्व में? और आपको लगता है पानी बेचना पड़ेगा आपको? How silly. पानी संजीवनी है, जल ही जीवन है, पानी अमृत है, एंड यू थिंक यू विल हैव टू सेल आउट. इस प्रोजेक्ट में अगर आप पैसा नहीं बनाओगे ना, मुझे ताज्जुब है, आप जो भी नौकरी करते हैं, जो भी प्रोफेशन करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, आप उसमें कितना बनाते होंगे. और क्यों? बिकॉज पानी से नीड बेस मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा. अंडरस्टैंड दिस गाइस, इट इज सच अ वंडरफुल अमेजिंग प्रोजेक्ट. और ये पानी भी क्या करने वाला है? वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट दैट इज प्रूवन. देयर आर सो मेनी रिसर्चेस ऑन दैट. एंड सेकेंड थिंग, प्लीज स्टॉप फॉलोइंग गूगल यूनिवर्सिटी. कितने लोगों ने केंगन प्रोजेक्ट सुनने के बाद गूगल पे गए, व्हाट्सएप पे गए, यूट्यूब पे गए चेक करने, डेमो देखने के बाद? कितने लोग हैं यहाँ पे? प्लीज टाइप योर नेम. इट्स अमेजिंग. ये झूठ मत बोले, ऑल ऑफ अस आर लायर्स. यहाँ पे बात चल रहा है ना, तभी केंगन वर्ड टाइप करने वाले हैं सब लोग. अगर मोबाइल में कुछ भी चलता है ना, सब लोग टाइप करके देखते हैं, वर्ड डाल के देखते हैं क्या निकलता है. और पहला क्या निकलता है? अल्कलाइन वाटर स्कैम, केंगन स्कैम. भाई जो पता डालोगे वही तो निकलने वाला है. अगर आपने वहां पे नेविगेशन में, गूगल में जो चीज क्लिक करोगे वही पते पे तो लेके जाएगा ना. अभी आपको शशि अय्यर का पता ढूंढना है, गूगल में डालते हैं तो आपको शशि अय्यर का प्रोफाइल मिलेगा कि वो रमेश अय्यर का प्रोफाइल मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आपको तो आप अगर स्कैम डालोगे तो स्कैम ही मिलेगा आपको. और मैं बोलूंगा, अगर स्कैम देखने का जिन लोगों को शौक है ना, हम लोगों को आदत पड़ चुकी है, मीडिया, न्यूज, फेसबुक कहीं भी टाइप करते हैं, प्लीज पुट स्कैम अबाउट योर नेम ऑल्सो. खुद का नाम सिर्फ टाइप करना, सरनेम मत डालना, या सरनेम भी डालना और स्कैम डाल के देखना. आपको कम से कम है ना 100 स्कैम वाली चीज निकलेंगे आपके नाम और सरनेम के साथ में भी. ट्रस्ट मी, मैंने करके देखा है ये. आप करके देखो, आपका नाम डालो सरनेम के साथ, वॉट एवर इट इज, सुरेश अय्यर, रमेश अय्यर, जो भी आपका नाम होगा, डाल के देखो कितना स्कैम आता है. और स्कैम डाल दो बाजू में. आप डॉक्टर डालो, पूरे डॉक्टर का लिस्ट आता है. फेसबुक में कितने लोग सर्च इंजिन में डालते हैं, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजने के पहले नाम डालते, तो एक नाम के कितने लोग निकलते हैं. मैंने देखा शशिधर डाला तो, शशि अय्यर डाला तो मेरे को वहां पे 100 लोग दिखते हैं. अखे इंडिया के दिखते हैं मुझे वहां पे. मुझे ही पता नहीं चलता मेरा प्रोफाइल कौन सा है, ढूंढना पड़ता है 5 मिनट. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मान के चलो आप गूगल यूनिवर्सिटी फॉलो करने वाले लोग हो तो आपको स्कैम ही नजर आएगा. आर ऑल दोज इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू दिस केंगन? और आधा अगर सर्च इंजिन क्लिक करते ना केंगन, वो कहां पे जाता है? मालूम है? दिखाते हो केंगन दिखाते हो, कहां पे जाता है? इट गोज टू टेंट, इट गोज टू KYK, इट गोज टू अदर अल्कलाइन फिल्टर्स एंड प्यूरिफायर्स. कितने लोगों ने अनुभव किया है? जैसे यूट्यूब में हम है ना, ये पायरेटेड मूवीज का नाम डालते हैं, साउथ डब मूवीज. बाहर पोस्टर में दूसरा हीरो होता है, अंदर दूसरा हीरो का मूवी निकलता है वो. हैव यू एक्सपीरियंस दिस? तो सिमिलरली आप केंगन टाइप करोगे, स्कैम दूसरे कंपनी को होगा और हमको लगेगा अरे केंगन स्कैम देखो. बट व्हेन यू ऑब्जर्व दिस क्लोजली, व्हेन यू डू अ डिटेल चेक, चेक करना फिर डिटेल करो, डोंट डू हाफ हार्टेड. कितने
कितने लोगों को प्रोजेक्ट करने के पहले आर यू ऑन 100% कन्विक्शन ऑन कैंगन, प्लीज टाइप। अगर 100% नहीं आप डालो कितना परसेंट है आपका कन्विक्शन। आई गिव यू सोल्यूशन टुडे। कितना परसेंट है आपका कन्विक्शन ऑन द प्रोजेक्ट? क्योंकि कन्विक्शन नहीं तो बिल्कुल नहीं करना, ये चलेगा नहीं आपके लिए। मैं अभी बता देता हूं, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। वाओ, 100%, 100%, 1000%, 100%। कितने लोग डैश 3 है जो 1000% और 100% बोलते हैं? Why are you not a dash 3 if your conviction is 100%? Give me one answer. क्योंकि मैं जानता हूं एज पर फिजिक्स एरोडायनामिक्स में 100% बोलो तो प्लेन टेक ऑफ में होता। तो आपका प्लेन टेक ऑफ हुआ है क्या? तो why are you not a dash 3? Why are you not a 6A2? Why are you not a 6A? Please ask yourself this question. Ranks are nothing but a measure of incomes that you have made in the project. Why we should rank up? It is definitely a definition of income that you have made on this Kangen project. इससे पता चलता है आप कितना समझते हैं और कितने इन्वॉल्व हैं ये प्रोजेक्ट में। अगर आप बोलते हो मैं सब कुछ सही कर रहा हूं फिर भी एंड रिजल्ट रॉन्ग है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं पत्थर को उछालूं ऊपर, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा? उसको जमीन पे लेके आएगा, isn't it? The stone has to fall down. If you tell me the stone is flying, it is floating, it is not coming down, उसका मतलब क्या है? There is some change in the dynamics of the stone that you have thrown up. That is why it is remaining in the air floating. So ladies and gentlemen, अगर मेरा effort floating है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से समथिंग नीड्स टू बी करेक्टेड समवेयर एंड दिस करेक्शन कैन बी वेरी माइनर, नॉट मेजर। आर वी टुगेदर टुडे? डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ अस? थोड़ा सा हार्श डेफिनेटली बात करूंगा। 11.5 किसने पिया है? थोड़ा पंजेंट ही होता है वो, है ना, मीठा बिल्कुल नहीं होता 11.5, लेकिन 10 मिनट में डिटॉक्स करता है। अनवांटेड टॉक्सिसिटी जो हमारे दिमाग में है, हमारे शरीर में है, हमारे 37.2 ट्रिलियन सेल्स में, उसको फ्लश आउट करता है। सो द जॉब ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज टू फ्लश आउट द अननेसेसरी टॉक्सिसिटी दैट वी आर कैरिंग टुडे। ओके, कैन आई डू इट इन हिंदी फॉर ऑल ऑफ यू टुडे? आर यू ओके विद दैट और यू वांट इंग्लिश हिंदी मिक्स? बाय द वे मैं तमिल में भी बोल सकता हूं, कन्नड़ा स्वल्प स्वल्प बरता, इतना 3 वर्ड मुझे आता है। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज में 2-2, 3-3 वर्ड बोल सकता हूं, बट कनेक्ट हार्ट टू हार्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टुडे। आई एम नॉट ऑन अ स्पीकर्स मोड, गैलरी मोड, बिकॉज मुझे सबके चेहरे देखने हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। ओके, स्वरूप जी बोल रहे इंग्लिश प्लीज। ठीक है, कोशिश करता हूँ, बीच बीच में थोड़ा हिंदी भी लेता हूँ। आई डू अ मिक्स ऑफ बोथ फॉर ऑल द ऑडियंसेस, काइंडली बेयर विद अस। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे. Are we all entrepreneurs here? Please type E in the chat box if you all are entrepreneurs. Or even if you are ready to be entrepreneurs, please type E in the chat box. Please type capital E, more good. Chinnappa bro to kabhi bhi capital mein hi hai, E mein. Wow. See, people are so lazy, they want to type small e. उसमें भी कंजूसी, एक उंगली चलाना है आपको, 2 उंगली से टाइप नहीं करना है। Wow, so as many people typing E, so we all are entrepreneurs. Now, for people who are first timers, sometimers, part timers, end users wanting to be entrepreneurs, आप explore कर रहे हैं या full timers या over timers? Do you know what makes you an entrepreneur? Entrepreneurship की पहली क्वालिटी क्या है? Please type, जो आपके समझ में आए। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट, ओके, फुल टाइम, ओके, रिस्क, ओके, इनोवेटिव, ओके, ये सारे जो डेडिकेशन, सेल्फ ड्रिवन, ये सारे डेफिनेशन सही है। पेशेंस, या हु सेड दैट? नागेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो जवाब दिया है ना, अमेजिंग, मेकिंग द सॉल्यूशन। पहली क्वालिटी, आप
graduate, post graduate हो जाते हो as an entrepreneur when instead of complaining, you take charge and ownership of the entire situation, guys. Stop complaining from this moment. You are the king of your own destiny. You are the captain of your ship. You are the CEO of this project. You alone and you alone and you alone can decide how much money you're going to make in this project. Ladies and gentlemen, thank you for participating. While participating, एक सवाल करना चाहूंगा, आप कितना कमाना चाहते हैं $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री से? कितना कमाना चाहते हैं? Let's say monthly, कितना कमाना चाहते हैं कैंगन से, Enagic से? Please type your amount, how much money you want to make. Now, when you put the money also, you are helping that many families, ladies and gentlemen. We need to understand. Wow, Santosh ji ka figures so amazing. Okay, 15 lakh, 2 lakh, 25 lakhs. Please keep typing, nothing is wrong. ये आपकी सोच है, आपकी ऊर्जा है, आपका सेल्युलर वोल्टेज है. It can be true. It can happen. आज आपको पता है ऑलरेडी इंडिया के अंदर लोग मंथली कितना कमा रहे हैं इनकम्स. People are already earning 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs also per month at a very young age. That's the potential. 10 lakhs per month. Wow. Plus 100 crores in 5 years. Wow. Amazing. देखिए जो भी फिगर आप यहाँ पे डालते हैं ना, whatever figures you put in your head today, everything happens twice. First in mind. Please. Second is in reality. Now, when you say first in the mind, please write it on a paper today. क्योंकि पेपर में रेडिएशन नहीं होता है. That is why guys use paper and pen. तो बुक में लिखोगे, डायरी में लिखोगे, लिख के रखो जो भी अमाउंट आपने अभी यहाँ पे लिखा है. But when you put this figure, ladies and gentlemen, do we know the marketing plan of Enagic? सबको पता है? Have you all seen the marketing plan? Yes. आप 333 टाइप कर सकते हैं अगर आप लोगों ने मार्केटिंग प्लान देखा है. और जिनको मार्केटिंग प्लान समझ में आया देखने के बाद में, प्लीज टाइप 444 इन द चैट बॉक्स. मार्केटिंग प्लान देखा है तो 333 टाइप करो. मार्केटिंग प्लान समझ में आया तो 444 टाइप करना है. So it is very, very important for us to understand the marketing plan, guys. Without understanding the marketing plan, you're not going to make money. हाँ, लोगों ने कमाया, that is pure luck. उनके नीचे कोई आ गया जिसको प्रोडक्ट भी समझ में है, बिजनेस समझ में, उसने कर लिया, लीवरेज कर लिया उसने. पॉसिबल है वो, बट दैट इज ओनली लक बाय चांस, डेस्टिनी कॉलिंग. एंड गाइस, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में ना हम गैम्बल नहीं खेलेंगे. And that too in a company that is 48 years into existence with 1.7 million satisfied customers, offices in 40 locations, 30 countries. Unbelievable, guys. A factory with the kind of latest advanced standards in technology, inventions, infrastructure facilities of ISO 13485, only manufacturing facility for water ionizer. मतलब वहां पे every single component, including the plastic, the plastic body that is used, the hose pipes that are used, those are all food grade, medical grade, zero toxicity. Because water is a health and wellness product. So any device that is utilized for purification system, filtration system, and that is going to generate water for drinking, ladies and gentlemen, if it has a certification of ISO 13485, medical grade, food grade, for different components, it ensures and assures that it is zero toxicity and zero health hazard. मतलब बेझिझक हम किसी को भी आसानी से रेकमेंड कर सकते. You don't have to think twice. If somebody shows you a Google scam, somebody shows you something, please don't waste your 1 hour explaining that. Please don't waste your time. उसको बोलना भैया तेरे को साइंटिस्ट बनना है ना. 1.7 million customers. Show me one product that has 1.7 million customers in water filtration and purification system. Do you know any brand?
प्लीज टाइप. किसको पता? A brand in water ionizer that claims and has 1.7 million customers. Do you know one brand that is 48 years into existence? One brand that has offices in 30 countries and 40 locations. Think about this. Is there a brand that has traveled from one country to another country all the time, even during your pandemic? As an essential commodity, essential product, do you know any one brand that has done all this, accomplished all this? Show me how many water brands you know that are selling so many units every single day. It has got so many kings, queens, presidents, doctors, celebrities endorsing, unconditionally, not for monetary gains. Anybody knows any other brand? Guys, without performing, these brands are making claims. They are spin-offs. अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट तो अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता ना, डुप्लीकेट ही कहलाएगा, मिमिक्री ही कहलाएगा, डमी ही कहलाएगा. Guys, when it comes to health, do you want a duplicate and a copy or an original star? मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार की सेहत के लिए, for the health and wellness of my family, as a responsible family member and family head, I would never negotiate anything. Non-negotiable, guys. We want the original. So very important. When we talk about the product and the company, it's amazing. The first thing that we need to do is, how many of you have visited the Japan factory where it is manufactured? Okinawa, Osaka, Japan. How many of you here? Guys, including me, I have not been there. Let me tell you very honestly, but my conviction is more than that. But people who are doubtful, people who feel, सच्ची का ओकिनावा ओसाका में है क्या बड़ा फैक्ट्री? इंडोनेशिया में ऑफिस है क्या? सिंगापुर में ऑफिस है क्या? मलेशिया में ऑफिस है क्या? फिलीपींस में ऑफिस है क्या? यूएस में 5 ऑफिसेस है क्या? I would recommend very, very strongly, ladies and gentlemen, you visit all the offices. एक वर्ल्ड टूर निकालो ना, 40 locations, 30 countries घूम के आओ ना. Guys, how many of you have traveled 30 countries by the way? If you are a serious professional, ना करना चाहिए आपको. आपने अगर प्रॉपर्टी 30 कंट्रीज में खरीदी, आप जाके विजिट करोगे कि नहीं करोगे? कि ऐसे किसी को बोल दोगे, किसी को दे दिया $1 million, go ahead. Nobody would do that, guys. We do credibility check. मैं बोलता हूँ, do a credibility check. And ladies and gentlemen, I have a good news for you. आज ही मैंने एक संकल्प लिया on this platform. I would like to share. Enagic की 50th anniversary is being celebrated in Japan, Okinawa, Osaka, at the source. That is 2 years from now, 2024. And I'm sure मेरे साथ 25 लोग चलेंगे. मुझे मालूम नहीं, मैंने 23 चेहरे लगाए नहीं, 2 चेहरे मेरे और मेरे वाइफ का तो है यहाँ पे. एंड 3rd चेहरा सुमा गौड़ा वॉलेंटरी, वो तो अगले साल ही जाने को रेडी है. तो आई कैन सी दैट शी सेज आई एम इन विजिटिंग नेक्स्ट ईयर. बट देन यस, 50th anniversary, by all means, Peninsula will have a presence, global presence in Okinawa, Osaka, Japan, dinner reception with Mr. O. And we will have a very, very special training there under the guidance of the advisory board members, top leadership, and even Mr. Oshiro, if possible, if he's hale and hearty and healthy. Of course, Kenyan water will keep him along with our blessings. We definitely are bound to be there, guys. So it is important. आज आपके डायरी में नोट करना, 50th Enagic anniversary will be in the month of June, July. Got to be there, guys. And let's prepare enough sales, enough incomes from Enagic to make it happen in our lives, guys. कितना चाहिए जापान जाने के लिए? कितना चाहिए? Can anybody time how much is required to be part of Japan event? Guys, आपका 1A रैंक है, 2A रैंक है, 3A रैंक है, 4A रैंक है, 5A रैंक है, 6A रैंक है. Guys, it's just about 20-25 sales. Can you guys
एज सीरियस एंटरप्रेन्योर्स अगर कहलाते तो 25 सेल कर सकते कि नहीं कर सकते? ऑफकोर्स संतोष जी, हमारे लेवल पे बात नहीं करेंगे हम लोग, 6 एंड अबव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. वी हैव टू एंश्योर दैट 1A 2A 3A एवरीबडी एज अ 6A. तो यस, लाइक संतोष जी ने बताया 1 and 2 मशीन्स. Isn't it so simple guys? अच्छा, ये 1 and 2 मशीन्स इनडायरेक्ट भी हो सकता है सेल, डायरेक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है आपको. एज अ 6A आपके टीम में किसी ने 6A लेग में कर दिया, आपका काम हो गया. कैन यू बी दैट लीडर, एंटरप्रेन्योर हु कैन इंस्पायर, a CEO that can inspire and motivate people to perform? आंख बंद करके आप लोगों को गारंटी और वारंटी देने की ताकत होनी चाहिए. when they talk about the water, understand, don't make claims of cures, don't give wrong information कि कैंसर ठीक होगा, डायबिटीज ठीक होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा guys. Let's come out of it. This is a healthy water for healthy people, and to remain healthy, to remain reverse your aging process, slow down the damages that are being caused to your body because of all kinds of toxicity. Air pollution, air contamination, water contamination, food contamination, you talk about lifestyle contamination, the thoughts that we carry in our head, that is a contamination. Everything is contaminated guys. एंड ये स्टबर्ननेस जो क्रिएट हुआ है ना हमारे सेल्स के अंदर, अनवांटेड बैगेजेस एंड टॉक्सिन्स के लेयर, उसको अगर लूज करना है ना, यू नीड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस टू फ्रैगमेंट एंड ब्रेक दो स्टबर्न केमिकल्स एंड कंटामिनेशंस. और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पानी का हो तो क्या होगा? वाटर इज द सिंगल सब्सटेंस एलिमेंट दैट ट्रेवल्स थ्रू योर होल बॉडी इन जस्ट अबाउट 12 minutes. लेडीज एंड जेंटलमैन, इंटरनली एक्सटर्नली इनहेल भी करते हैं पानी को, तो भी अगर सही पानी है, आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर है जिसका पीएच नेचुरली अल्कलाइन हो, वो आपके लिए बहुत कुछ कर जाता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, अच्छा, यू डोंट हैव टू बी अल्कलाइन 24/7. कितने लोगों को ये गलत फहमी है कि मुझे कंटिन्यूस, मेरे पास मशीन है तो पूरा अल्कलाइन पानी पीना है, 9.5 pH ऑल द टाइम. नॉट रिक्वायर्ड. आप चाय भी पी सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं, सोडा भी पी सकते हैं, कोला भी पी सकते हैं, अल्कोहल भी पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मन मर्जियां. बट योर बॉडी इज सपोज टू रिमेन अल्कलाइन ड्यूरिंग द ईटिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस, है ना. इंटेस्टाइन का पीएच 8.5 होना बहुत जरूरी है, वो एंजाइम्स को रिलीज करने के लिए, और फूड और ये जो भी कोला सोडा हम लेते हैं उसको प्रोसेस करके सेपरेट करने के लिए बॉडी से. Your intestine, small intestine needs to be at 8.5 pH. So alkalinity has to be for 1 or 2 hours only. कितने लोगों को पता है जो हाइड्रोजन हम लोग पानी पीते हैं, जैसे हाइड्रोजन बेनिफिट्स, एलिमेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की स्टोरी, आपके शरीर में कितने घंटे तक रहता? चलिए टाइप कीजिए, लेट अस अंडरस्टैंड. मैं पानी पी रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, कितने घंटे तक आपके शरीर में हाइड्रोजन रह सकता? सुमय, यू हैव टू अनम्यूट. यू आर म्यूटेड. हाउ मच टाइम? लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो, हम सबको दुनिया को बोले हाइड्रोजन वाटर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. I appreciate your honesty, Suma. That's the way to learn forward. Santosh ji, 15 minutes. Wow. Scientists लोग बैठे 45 minutes. Wow. बोलिए बोलिए. So understand this whole process. Hydrogen can remain in your body, okay? Yes, for anywhere between 15 to 20 minutes. That is excessive, okay? But 15 to 20 minutes is the range, ideal range where hydrogen remains in your body. That is why. How do you know hydrogen abhi dilute ho gaya? Any excess of hydrogen passes off through the urine and waste, निकल जाता है. इसके लिए आपको डिटॉक्सिफिकेशन का सेंसेशन आता है 10-12 मिनट में.
So that is the first biomarker indicator कि हाइड्रोजन ऑलरेडी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है और वो बाहर निकलेगा, उसके आगे वो रहता नहीं वहां पे. There is no role for it. So ये सब गलत फहमी मिथ है ना, जो अल्कलाइन वाटर, आयोनाइजेशन एंड ऑल दिस, ये सब हमको दिमाग से एक एक साफ करना है. We need to understand that. So when we talk about this ionization, alkalinization, yes, so it works. It works when you do it properly under guidance. One ground rule, जो भी वाटर प्रोटोकॉल है, talk to the person who has introduced you कि कितना पानी मुझे पीना है, कब कब पीना है, कैसे पीना है, मेरे मशीन को कैसे मेंटेन करना है. If you do not do e-cleaning every 15 days, deep cleaning in every 6 months, मतलब साल में 2 बार, आपके प्लेट्स में कैल्सिफिकेशन हो सकता है. वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन देखते हैं हम लोग वाटर में, फ्लोटिंग पार्टिकल्स. हमको लगता है सब व्हाइट दिखने वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं होता, कैल्शियम कंटेंट भी होता है. आपके प्लेट प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा है तो पोलैरिटी चेंज होता है, कैल्सिफिकेशन होता है. कैल्सिफिकेशन होता है तो ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग इज अ मस्ट. तो डेट और स्केड्यूल लगा के आपको ये मेंटेन करना है. एवरी डे मॉर्निंग एंड नाइट, व्हाइल ओपनिंग योर मशीन एंड व्हाइल शटिंग योर मशीन इन द नाइट, you have to leave 2 to 3 minutes of beauty water. ये कंपल्सरी है, हमको करना है. अगर हमको शेल्फ लाइफ एंड द ORP, हाइड्रोजन बबल्स मेंटेन करने हमारे मशीन के पानी में, तो ये बहुत जरूरी है. मनमानी मत करो, डेट लिख के रखो. When was the first time you installed the machine? When was the last time you did a e-cleaning and deep cleaning? And follow the protocols, guys. So very important. Now, because if you want to be a water professional, guys, आपके चेहरे पे दिखेगा, आपके स्किन पे दिखेगा. पानी को अपना काम तो करने दो by drinking water. Stop giving excuses. अगर एयर टाइट कंटेनर है ना, तो हाइड्रोजन 2 घंटे तक रह सकता है आपके बॉटल में. So stored water also we can have into us if it is a airtight container. और वो आके बोलते हैं ना, BPA फ्री होना चाहिए. Plastic is carcinogenous. Water is a solvent, so it will mix and absorb everything. तो metallic toxicity नहीं होना चाहिए. ये सब आपको देखना है. But safe can be BPA free. We need to understand. So if you do it the right way, the water works. So very important for all of us जो भी नए हैं, आज मशीन लिया है, please stop going to Google, going to YouTube and searching scams. किसी ने आपको बोल दिया ये पानी काम करेगा कि नहीं करेगा, किसी ने लिया है, मेरा मशीन बेच के दोगे क्या? People do this. These are the people who buy machines from unauthorized sources. They buy on discounts. और वो लोगों को सिर्फ मशीन दिया जाता है, बाकी कोई सर्विसिंग दिया नहीं जाता है. प्लीज डोंट एंटरटेन सच पीपल. एक तो उनकी मशीन की वारंटी नहीं होती है, वैलिडिटी नहीं होती है. गलत लोगों को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे. आर वी टुगेदर ऑन दिस? If you buy in discount, go to the person from whom you bought it in discount without looking at our efforts, without looking at our commitment and support for next 25 years. Charge them a premium on maintenance. 1 लाख रुपया बोलो, 1 साल का मेंटेनेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो let them pay a premium. डिस्काउंट में लेते वक्त मजा आया ना. Others, let them compromise and struggle in life, guys. Don't support such people. Even if they are your relatives, I'm telling you, don't make this mistake of supporting. We are an open platform. We educate everybody. Why they cannot come on this platform? मुंह नहीं दिखा सकते अगर गलत काम करते हैं तो. Panacea is a platform that stands for ethics. 7 years we do this program, guys. If Enagic India director from compliance comes and endorses, if chairman of the entire 1.7 million distributor comes and endorses our system, that this is a system that should be duplicated. Ladies and gentlemen, we are doing it right. We can take pride in that, isn't it? But we don't take that pride into our head. We want to serve better, we want to serve more, we want to promote ethics. Like JV sir said, he was awarded that position for his work ethics. We need to maintain that work ethics in what we do. Whether it is education, we need to commit for education and trainings. If you are an entrepreneur, you invested 1 crore to start a restaurant. How many of you will open up daily? आपका hotel restaurant खोलोगे daily, you will open up your restaurant.
What time will you open and what time you will close? If one day customer doesn't come, how many of you will quit the hotel business? You see, बाजू वाले का business बहुत अच्छा हो रहा है, आपके ये customer ही नहीं आ रहा है. How many of you will still quit the business? Or what you will do? उसके होटल में चलने का रीजन क्या है? Will you not go and educate yourself? Will you not find out? Can we do the same thing on our? When we talk about drinking water as a business, as a profession, will we do the same thing? Are we willing to do that? हम लोग बोलते हैं हम 2 घंटे के लिए होटल खोलेंगे, बाद में नहीं खोलेंगे. Will you do that after investing 1 crore? मान लो आपका EMI है, every month you have an EMI, banker is going to sit on your head. सुबह सुबह उनके 10 फॉलोअप शुरू हो जाएंगे आपके EMI के लिए. How many of you will not open the hotel or your restaurant for the next day? 24/7 शुरू रखेंगे भाई. Will not give excuses and reasons because we have a EMI and a follow-up. My question is, anybody who bought an Enagic machine, do you have so many people chasing you for their money that you took as a loan to buy a Kengen unit? अरे किसी को कोई stress ही नहीं है. The second important thing after buying the machine as an entrepreneur, we need to run the business. How many of you want to run the business and make a fortune? प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, प्रोडक्ट आपको हेल्थ देगा, वेलनेस देगा, एनर्जी देगा, आपके सेल्स को वोल्टेज देगा, हीलिंग वोल्टेज एंड मिरेकल वोल्टेज. बट बिजनेस के लिए हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट टू बिल्ड योर बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 1 year? व्हाट इज योर बजट? हैव यू बजटेड? प्रमोशनल कॉस्ट, ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, कितने लोगों ने बजट रखा? आई विल इन्वेस्ट दिस मच टुवर्ड्स दैट एक्टिविटी. And do you know, any ideal budget, good budget for any product, any brand, 25% manufacturing cost के बाद 75% marketing and promotional cost होता है, ladies and gentlemen. तो आपने अगर 3 लाख का मशीन खरीदा है, what is the 75% cost? I'm very weak in maths, तो कोई मुझे कैलकुलेशन करके बताएंगे what is 75% cost of whatever 3 lakhs का अगर मशीन में खरीदता हूं तो? मदन भाई, you can calculate. 2.25. आपका 1 साल का मार्केटिंग बजट मिनिमम होना चाहिए. Ladies and gentlemen, if you want to do a serious business, 75% cost should be a marketing cost provision for the first year, not on the machine. मशीन में जितना डाला, what do we talk to people when we talk to people? अरे सिर्फ मशीन खरीदो, लोग मैं डालूंगा तुम्हारे नीचे, ऐसे कुछ नहीं होता. लोग पड़े नहीं है रास्ते में 3-3 लाख रुपया लेके. Even if you offer them gold, na, they will not buy. You offer them plot, they will not buy. You offer them the moon and the Mars, they will not buy. They will investigate, guys. So we need to be very clear in our heads. 75% marketing cost अगर नहीं है, अभी ये तो मैंने प्रोडक्ट का बताया क्योंकि आपको आसान कराने के लिए, बिकॉज प्रोडक्ट यू मेड इट अफोर्डेबल. बट अभी जिन जिन लोगों ने इनकम लिख रहे हैं ना, वहां पे प्रॉफिट कितना लिखा मंथली? 1.5 lakhs. लेडीज एंड जेंटलमैन, 1.5 lakhs का आप 75% निकालो, कितना होता है? दैट शुड बी अ मार्केटिंग कॉस्ट फर्स्ट. प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है भैया, बिना पैसा डाले प्रॉफिट निकलेगा क्या? अंडरस्टैंड दिस. अरे आपने 75% डाल के 75% पूरा आ गया ना विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months. कितने लोगों ने प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी किया है कभी? यू हैव वर्क प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने देखा है? लोग है ना 1 करोड़ 2 करोड़ डाल के 3 साल के बाद ब्रेक इवन बात करते हैं. आफ्टर दैट प्रॉफिट्स. टाटा होटल्स अगर आपने देखा रहेगा, हिल्टन होटल्स, जो भी बड़े बड़े होटल्स देखते हैं, यू नो कितने साल में उनका ब्रेक इवन आता है? They invest hundreds of crores on 7-star hotels and properties. The profit break even is the 10th year. 10 साल तक वो सिर्फ सर्विस देते हैं guys. But after 10 years, everything is a profit. मदन ब्रो, 5 years में कोई 7-star होटल का ब्रेक इवन नहीं निकलता, आज तक नहीं निकला.
So it is minimum 10 years, guys. 10th year के बाद everything is a profit for generations. That's how businesses are built, empires are built. What are you trying to build here on this program? सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, हम क्या बनाना चाहते हैं? यहां से 1 महीने में 1.5 लाख रुपया गलती से कमा लिया, बस हो गया? और we really want a consistent income every month like a job. I can tell you guys, जो कमिटमेंट के साथ आप अपना नौकरी संभालते हैं, आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन संभालते हैं, क्लिनिक संभालते हैं, अपना हॉस्पिटल संभालते हैं, अपने छोटे मोटे एंटरप्राइजेस को संभालते हैं ना, वही एफर्ट यहाँ पे डालोगे, आपका एनुअल इनकम कैन बी मंथली इनकम इन जस्ट अबाउट 1 to 2 years. आई थिंक दैट डिजर्व्स अ बिग क्लैप, राइट? आपका एनुअल इनकम अगर मंथली इनकम हो सकता है, should you invest your time and effort to learn this program? So ladies and gentlemen, on this platform today, let us first of all type gratitude for Enagic business project. Please type gratitude. अगर लाइफ में कोई ब्लेसिंग मिले, अच्छी चीज मिले ना, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, प्लीज बोलते रहना. टाइप मिलियन टाइम्स डेली टाइप करो ग्रेटिट्यूड. टाइप करने का मौका मत छोड़ो. किसी ने व्हाट्सएप पोस्ट डाला तो ग्रेटिट्यूड डालो, फेसबुक पोस्ट डाला तो ग्रेटिट्यूड डालो. यू नो व्हाट, ये सीड्स आप ही के पास वापस आएंगे एज अ ग्रेस. Find reasons to subconsciously program yourself to type gratitude, speak gratitude, breathe gratitude. It extends your life and health. Please type. लोग बोलेंगे क्या मजाक चल रहा है, ग्रेटिट्यूड बोलते हो हर चीज के लिए. Ladies and gentlemen, I live by gratitude. I am experiencing miracles of gratitude. एक गिलास पानी देखते हो ना, ग्रेटिट्यूड बोलने के बाद पियो. खाना खाते हो ना, ग्रेटिट्यूड बोल के मुंह में डालो. किसी ने सर्व किया ना, ग्रेटिट्यूड बोलो. इवन इफ इट इज योर स्पाउस और योर किड्स, सबकॉन्शियसली इस वर्ड को जहन में डाल दो, ग्रेटिट्यूड, एज मेनी टाइम्स यू कैन. दिन में अगर 60,000 थॉट्स आते हैं ना, तो 60,000 टाइम्स ग्रेटिट्यूड बोलना सीखो दिन में. योर लाइफ विल नेवर बी द सेम गाइस. यू विल बी अ मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर बाय डिफॉल्ट. ट्राई दिस डेली. 60,000 थॉट्स के लिए 60,000 ग्रेटिट्यूड. आजमा के देखो, मुझे बोलो, it works. So ladies and gentlemen, today we found such an amazing project. What we will do is, almost it's the last 5 minutes, we will take Q&A. हम लोग ज्यादा नहीं कर पाएंगे, but next Saturday business meet may come with your diary, come with your notes. We are going to discuss Enagic business plan. Is that okay? Properly, each one of us have to understand Enagic marketing plan, compensation plan to make money out of this. And the second step after seeing the marketing plan is to understand, to analyze how it is going to work for me. Your efforts has to be planned based on the marketing plan. Your upline cannot give you incomes. Your downlines cannot give you incomes. The marketing strategy that you deploy, genealogy plan that you work, the algorithm is going to give you the profits, guys. And people who have understood this marketing plan are the people who have made money. People who understood money are the people who made money. Where should you invest your time, education, efforts if you want to make money? It is more on the business, guys. And let us not shy away. You can tell everybody, Saturday I'm attending a business school. That is going to help me to transform my annual income into monthly income in just about 1 year of education and time by applying those inputs. Are we ready to give our 1 hour? Guys, जिस तरह आपकी सांसें चलती है ना, how many of you would take inhale and exhale after 1 year? बीच में सांसें ही नहीं लेंगे 1 साल तक. Can you do that? How can you take break from the system then? एक सैटरडे आए, बाद में 5 सैटरडे के बाद आएंगे. Guys, when you miss a system, you should have this in mind. मैं अपनी सांसें रोक रहा हूं. I am moving towards death. You need to understand this. Business में आपका death होना
जायज है, if you're not attending the system and you're giving gaps. You breathe through the system, inhale and exhale. Friday, Saturday, 2 days. You cannot skip it, guys. 52 weeks of commitment देना, result देखना क्या होता है आपके साथ. We will learn everything on this platform, how to invite, how to present, what to talk, how to make our fortune. ऐसा कौन है जो हमें रोक सकता है, guys? जहर बिकता है, लोग जहर बेच के पैसा कमाते हैं, लोग नेगेटिविटी बेच के पैसा कमाते हैं. आप हमारी एक नेगेटिव चीज बताओ जो हम बेच रहे हैं, यहाँ पे या बात कर रहे हैं. अगर पॉजिटिव चीज बेच रहे हैं ना, वो किसी को अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा. उसके पॉकेट को डेंट नहीं मारेगा, उसके लाइफ को खराब नहीं करेगा. अगर वो केंगन मशीन में इन्वेस्ट करता है, केंगन प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करता है, इट कैन गो रॉन्ग. तो क्यों नहीं करोगे आप? डोंट शाई अवे फ्रॉम टॉकिंग मनी बिकॉज यू आर गोइंग टू हेल्प अदर पीपल मेक मनी. आप लोगों को है ना मुफ्त का अपॉर्चुनिटी देना बंद करो. कोई नहीं आता मुफ्त का दोगे तो. यू हैव टू बी विलिंग टू पे फॉर ऑल दिस. We will start a Panisha school, Panisha system now for serious people. How many of you are willing to pay a price for it? 1 year ka charges कौन भरेगा fees? Are you ready for that? To learn how to make your millions? Free में millions नहीं आते, guys. Free में millions नहीं आते. भूल जाओ आप. मुफ्त का बांटा हुआ लंगर कहलाता है, और वो लंगर है ना कभी भी बंद भी हो सकता. For whatever the reason, there is no obligation. Obligation is two-way process. When you seed, when you invest, when you pay, that is when you get the rewards. हक बन जाता है आपका यूनिवर्स से भी पूछने का. I have seeded, so I need to get my rewards, guys. You can demand it from the universe. With this, over to Suma Gowda right now to facilitate any Q&A if anybody has. Thank you, sir. Gratitude for that. Such a wonderful session. Like this is the experience of each and everyone. And for those who have joined newly, you are going to witness each week different topics and different perspective of Kenyan water, because the all others who have been here, they know it. And sir, we can't just say gratitude to you, because thank you is a very small word and gratitude holds weight. But gratitude nuggets हमें दे रहे हो, so तहे दिल से from my side and from all the participants, the viewers and the audience of the Penasian platform, gratitude to you, sir. And yes, any questions as we have come to the end of the session? Any questions from the audience? You can type or you can unmute yourself. As my mentor says, no question is a silly question. You can just go ahead. So जो भी है पूछ सकते हो. If not, I'll wait for 30 seconds. Yeah, else we'll close the session and we'll take out. So next week, like Saturday, as Shashi sir has told, come with your diary, do your homework on the market plan. So जो भी doubts है, so that we ask. If we don't ask any doubts or clarification, there is only two things: whether you have like understood everything or you have not understood anything. So dono jagah, again, it needs a proof. If you have understood, are you making out of it the fortunes out of it? And you have not understood, then you have to get it from the mentors. Jabki free mil raha hai. I just wrote, if anything is free, then you are the product. But Panasia is such a platform where like everything is given for free. Yes, when you don't value it, there can be end for anything that is good in this world. With this, I request everyone to come on the videos. Yes, those who are traveling. As always, it is said in this platform, we are the next millionaires, trillionaires of this water industry. We are the torch bearers who are going to create history, who are going to transform the world for a bigger cause. Yes, yes, yes. I think Madanji, you could help us with the screenshot, please, or anybody in that matter, you can help us. And
Next week, yes, there is a surprise on the Friday talk show who is going to be the guest speaker. So let us wait for the announcement after meeting 001 of US Enagic Distributors Association Chairman JB Pacifico, sir. What a fantastic week this has been, sir. Yesterday, such a bombarding session, and today it is over the top. Gratitude, everyone. Shubhratri. Madanji, has it been taken? Yes, yes, yes. Thank you, guys. Shubhratri. Have a great time. Thank you. Gratitude.